दोस्तों वेलकम टू सेम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस फॉर 19th of February 2026। इसमें हम ये देखेंगे कि 19th फरवरी को क्या हुआ और आने वाले दिनों में यानी कि कल टू 20th को मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटीज रह सकती हैं। दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करते हैं। हम प्रोबेबल एरियाज देखते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो, एग्जॉशन हो, ट्रैप्स हो, और हम मार्केट की डायरेक्शन भी एनालाइज करते हैं। दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देते हैं। देयर आर नो ट्रेडिंग टिप्स गिवन एट ऑल। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। कृपया उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और हमारे साथ डिस्कस कीजिए मार्केट प्रोफाइल एंड order flow को। I'm sure you will enjoy the journey with us. Now having said that, दोस्तों हम एनालाइज करते हैं निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर फॉर 19th of February। पर उससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा 18th फरवरी, 17th फरवरी एंड 16th फरवरी के प्रोफाइल स्ट्रक्चर में। दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ये डिस्कस किया था ऑन 16th of February कि ये एक बहुत ही लीन स्ट्रक्चर है, एक वीक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर रिपेयर मांगता है and the market should come down and repair this area. On 17th of February, again in the Telegram channel, I made it very clear that this A period, ये एक weak period था. This required to be repaired again. We had a poor high closing, एक unfinished business ऊपर रह गया था, एक हमारे पास weak area नीचे रह गया था। Then again on 18th February, when we saw the structure, we found that the opening was within the range of the previous day और मार्केट नीचे गई, एक्सटेंशन नीचे हुआ, सी पीरियड में हमें एक ऑक्शन फेलियर नजर आया एंड देन वी वेंट अप। मार्केट इधर ही घूमती रही वैल्यू एरिया में एंड फाइनली इन द जे पीरियड एंड द के पीरियड वी गॉट अ लेट सर्ज इन द प्राइसेस। बट ये सर्ज क्या इनिशिएटिव बायर्स का था? दिस वॉज इम्पोर्टेंट टू बी सीन। दिस सर्ज वॉज नॉट डन बाय इनिशिएटिव बायर्स, दिस वॉज अ स्ट्रक्चरल वीकनेस। ये एक वल्नरेबल एरिया था प्राइस का और ये कहा गया है व्हेन यू study the book on market profiles, you'll find कि a late price surge without a value migration is often a short covering। ये एक short covering थी, ये एक इमोशनल एक्टिविटी थी। हाँ दोस्तों हमारा वॉल्यूम पीओसी तो माइग्रेट हो गया था ऊपर, पर क्या ये वैल्यू एरिया migrate हुआ? There is no migration of the value area of 17th and of 18th February. So what will you call this surge? This surge is nothing, this movement is nothing but a short covering, it is nothing but an emotional movement। चाहे हमारी वॉल्यूम पीओसी ऊपर आके बैठी हो, that does not make a difference until and unless the value area has shown some shift towards the upside, which did not happen. This was weak. This was weak. This entire structure was weak. So how long the market could have gone up, right? Today, let us see what happened on 19th February when the market opened। मार्केट रेंज में खुली, उसने ऊपर एरिया टेस्ट किया, नीचे आया। जब मार्केट ओपन होती है इट टेस्ट द अपर एरिया, इसको एक ओपन टेस्ट ड्राइव कहा जाता है। एंड since it did not find any buyers above here, the market came down again। It was a failed initiative activity, right? And it came down all the way to the levels that you can see till 25,400 के करीब मार्केट नीचे आई है, which is a huge movement which not only corrected this weakness, it not only corrected this weakness of A period in 17th February, but it also corrected the structure of 16th February। And this is the beauty of
market profile, right? And this downward movement was predicted in my Telegram channel on 16th itself. In fact, I had shared the chart of Bank Nifty market profile. I had clearly marked these areas as a structural weakness, and I had very clearly said that in Bank Nifty also I will be looking for a correction. I am not satisfied with this type of movement on the top. तो ये हमारा मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर था. मार्केट ओपनड with corrected the structural weakness and then came closing down till it corrected the structural weakness of 16th also. Now let us see what happened. एक अर्ली प्रोब हुआ, कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं मिली, रिस्पॉन्सिव सेलर्स आए, जो मार्केट ओपन हुई बैलेंस में इट फेल टू अट्रैक्ट इनिशिएटिव बायर्स, वैल्यू से ऊपर ऑड्स जो थे वो एक रोटेशन के थे ऑपोजिट साइड के. तो दिस इज अ क्लासिक फेलियर ऑफ अर्ली अपसाइड इन्वेंट्री. Now let us see what happened. What did we got? We got a medium IB. IB मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या होता है. Some people keep asking me again and again, but if they listen to the videos, they will come to know the A and B period combined together, or the first hour, is the initial IB. The IB was not narrow, right? यूजली जब आई बी नैरो होती है, आई बी स्मॉल होती है, तब एक ट्रेंड डे मिलता है, राइट? बट दिस वाज अ मीडियम आई बी. देयर वाज एन इनिशिएटिव सेलिंग. दिस इज नॉट अ बैलेंस, दिस इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अ लोअर साइड. हमारा आर एफ जो है वो अब नेगेटिव है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो लीन है, हमारी क्लोज जो है वो वॉल्यूम पीओसी पर हुई है, राइट? एक्सेप्टेंस हमारी लोअर प्राइसेस की है, पोटेंशियल हमारा कंटिन्यूएशन का है, बट दैट ओनली इफ ओपन कंफर्म्स, राइट? We cannot expect, we cannot predict for tomorrow until we know where the market is going to open. The opening will decide a lot, right? तो अगर मैं डे टाइप क्लासिफिकेशन आपके लिए सम अप करूं तो हमारे पास क्या था, करेक्टरिस्टिक्स में क्या था? ओपन टेस्ट ड्राइव 3, फेलियर अबव था, वी फेल टू फाइंड बायर्स अबव, एक मीडियम आई भी हुई, मल्टीपल डाउनसाइड एक्सटेंशंस हुई, वैल्यू ऊपर माइग्रेट नहीं किया, नेगेटिव रोटेशन फैक्टर हुआ, क्लोज हमारा वॉल्यूम पीओसी पे हुआ, and acceptance हमारा lower हुआ. So what type of day is this, friends? Would you like to call this a trend day or something else? Because this is a 3 IB. So I would still not call it a trend day, but it is still clearly seller dominated. Structure हमारा lean है, एक normal variation day down है with a very lean type of structure. एक fully trend day नहीं है. There are many areas which need to be repaired. All these areas demand a कंप्लीट रिपेयरिंग. अब अगर हम स्ट्रक्चरल कंडीशंस देखें कि कल क्या हो सकता है, तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे. 18th की स्ट्रॉन्ग क्लोज थी, बट कोई वैल्यू माइग्रेशन नहीं था, इसका मतलब ये कि वीक रैली थी. 19th को रिजेक्शन मिला हायर प्राइसेस का, दे वर रिजेक्टेड. एक 3 IB की एक्सटेंशन मिली है टुवर्ड्स द डाउन साइड, इसका मतलब इनिशिएटिव सेलिंग थी. एक क्लोज मिला है हमें वॉल्यूम पीओसी पे, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हुआ है लोअर प्राइसेस पे. हमारे पास एक गैप है, दिस इज द गैप, and these areas which I have marked in gray color, this is the single print areas at the bottom. एक लीन स्ट्रक्चर है, लीन स्ट्रक्चर का मतलब ये स्ट्रक्चर भी इनकम्प्लीट नहीं है. हमारे पास प्रोबेबिलिटीज क्या है? हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है
कि एक फ्लैट ओपन हो इनसाइड हो तो what can happen, the first trade can be a rotation trade, but the probability is slightly higher of a downside continuation if the acceptance is lower. अगर gap down open होता है then again we have to see the acceptance, and gap failures often travel the opposite extreme. If this gap is not filled up, there is a failure, then it has been seen that sometimes gap failures travel to the opposite extreme. अगर gap up हो गया तो we have to watch for acceptance above the value. We have to look अगर one time framing हो रही है, but that has a very low probability unless some very strong initiative buying peers or something like that sort. अगर हमारे पास बिलो वैल्यू खुलता है बट विद इन रेंज भी खुलता है, सेलर्स आर स्टिल इन कंट्रोल, rallies can go towards the value area. We can look at the gap like a magnet. Downside continuation की probability बढ़ जाती है. But let us see what happens. The first hour will tell us many things. The prior day's conviction रहती है कि नहीं रहती है. We need to watch out. What do we watch out? If we watch out for where the value is developing, is the initial balance extending to one side quickly? Does the market reject lower prices? Once we start observing these things, then things will happen. Now, what else do you want me to tell you about the structure? A little bit of बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में भी आज वही था, ओपन ड्राइव था. दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव एक्चुअली डाउनवर्ड्स. ये भी एक स्ट्रक्चरल वीकनेस थी, ये भी एक स्ट्रक्चरल वीकनेस थी, एंड इवन दिस वाज a structural weakness, and Bank Nifty has very beautifully, repaired the whole stuff. This is it. ये order flow है, but I think the video has become too long. Let us not discuss it with you further. Let me take you to the 15-minute charts. जो मैं ये post कर देता हूँ. These are certain levels I have marked. You can see the gap over here. We also have some single prints in this area. So let us see how, where the market opens. Does it open below, above the value area over here? These are rejection areas, probable areas of rejection, probable areas of correction, or does the market open somewhere down here or straight away here? That only we will come to know tomorrow, and we will be able to take action accordingly. चलो दोस्तों, thank you for patient hearing. Thank you for listening to us. Thank you for liking us and following us. And I would request you to please keep following and keep learning and trade safely. Define your risk before you define your profits. And see you tomorrow or in the next video. Thank you very much, and bye-bye.